as I mentioned, Peter, who is Jan's husband, is a very dear friend of mine from England over the past 7 to 8 years. And as I also had mentioned, when he called me up last year and said that Jan wants to do another, get another Guinness World Record, which was going to be the 5th one, it was interesting when he mentioned it. I said, okay, this is a brilliant idea, let's do it. So that's how we got involved, that's how we started planning. And of course, one of the things that I asked both Jan and Peter was whether we can have Indian women participate in this expedition. And when they said yes, we started immediately looking. I was very fortunate that just by sheer luck, I happened to meet Tanvi's dad at a school reunion, and I just happened to mention the expedition and they loved it. So they called up Tanvi and said, Tanvi, you have to do this because it's one of these life-changing opportunities, which he readily agreed. And then a few days later, I was talking to Ankita. She's been a good colleague and a close friend for the last 4 to 5 years. And I mentioned to her this whole expedition. She got extremely excited. And she said she knows personally a very, very hardworking, beautiful and dedicated individual by the name of Madhvi. And she's done mountaineering courses, but she's also a supermodel, so this would fit really well. And then we had the team. So when they were introduced to Jan and Jan spoke with all of them, they had immediate chemistry between them. So this team is now almost a family. It's even closer than a family, which annoys Tarak sometimes, but that's okay. तो सर किसी और को जुड़ना हो, किसी और को यहाँ पार्टिसिपेट करना हो तो कैसे जुड़ेंगे सर? कैसे यहाँ पे पहुँचेंगे आप? कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे कि मुझे मेरी वाइफ को आना है इसमें, तो कैसे आएगी? ये अभी ये एक्सपीडिशन के लिए बंद हो गया है. I mean, we have 5 women, really good, strong women who are going to go to the South Pole in December. Maybe the next expedition or the next adventure that we do, we will look into, we'll open up for registrations and everyone can apply and we'll do the publicity and everything else around. तो कोल इवेंट यहाँ कैसे जुड़ गया साथ में, कैसे किया? हम लोग जुड़ गए बिकॉज वी बोथ नोज ईच अदर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉर्मली हो सकता है कि इंडिया में बहुत लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, और देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क बिहाइंड दिस बिकॉज यहाँ पे पहले से कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे इंट्रोगेशन नहीं था. तो नॉर्मली होता है क्या, इंडिया में एवरेस्ट को सब लोग जानते हैं कि पीपल आर गोइंग टू एवरेस्ट एंड दिस इज समथिंग कि सब लेना चाहते हैं. साउथ पोल इज टोटली वेरी डिफरेंट. जैसे एवरेस्ट का स्ट्रेंथ दूसरे तरीके से है, वहाँ पे चढ़ने में ज़्यादा हम लोगों को लगता है. साउथ पोल इज समथिंग जहाँ पे आपको स्टेडी और कॉन्स्टेंटली चलना पड़ता है, बट दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, यू आर गोइंग अगेंस्ट द विंड. तो दिस इज समथिंग विच इज टोटली एन डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो इट वॉज समथिंग विद सब्जेक्ट टू मेड, और ये सब इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बाई ऑलमाइटी ओनली कि उनके पास ये आएगा, वो मेरे साथ ये शेयर करेंगे. शेयर करने के बाद समझ में आएगा कि करना है नहीं करना है. देन वी स्टार्टेड, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, फिर लगा कि नहीं चलो कर सकते हैं. और अभी करते 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 आई थिंक वी आर इन द एक्सट्रीम एंड. अभी दिसंबर में दे आर अबाउट टू गो टू साउथ पोल, और आई बिलीव कि ये लोग ये कंप्लीट कर भी लेंगे. सर 1-2 औरतों को घर में संभली बातें हम कितनी मुश्किल का तब रहेगा? अच्छा, वो तो मेरे को ही पता है. बिकॉज इनके आसपास ओनली औरतें ही हैं, मैं भी औरत हूँ, मेरी टीम औरतों का है. वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑल women 9,000 calories a day, on top of which we were munching all day, chocolate and all sorts of wonderful things. 9,000 calories, so probably 10,000 a day, and I lost 1 pound every day and came back with the best figure I had had for years. So it's pretty good. And the main thing is the food you have has to be sadly freeze dried because of weight. You know, if you're going Central में on 15th of August उनका स्पीच में हम दोनों का नाम मेंशन किए थे. ये हम लोगों के लिए मॉरल सपोर्ट है जो हम लोगों के लिए ज़रूरी था. अब आगे देखा जाएगा. और आप जो डाइट का बात पूछे थे, एक डिफरेंस से इंडियन डाइट और इन लोगों का डाइट में,
यूजुअली हम लोगों में जो प्रॉब्लम है, हम लोग प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन इंटेक कम करते हैं, जो स्ट्रेंथ के लिए एनिमल प्रोटीन ज़रूरी है। जैसे घर में भी आप सब देखे होंगे, आज मंडे है, नो मीट नो फिश, कल ट्यूसडे है, नो मीट नो फिश, वेडनेसडे खा सकते हैं, थर्सडे अगेन नहीं खा सकते क्योंकि उस दिन पूजा होता है। ये इंडिया में है। पर वहाँ से वापस आने के बाद, जाने के बाद, जैन को देखने के बाद मुझे लगा हम लोगों को डेली एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन से हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलता है, जो आगे हम लोगों को पोल खींच के साउथ पोल पहुँचने में बहुत हेल्प करेगा। खाने में डिफरेंस से यू आर राइट। ओके जी है। And what she said was, we must continue eating what we are comfortable with. Okay, because we are training really hard. We are pulling tires, like two big tires, we tie it to our body and we pull it. उसको कोई भी रेजिस्टेंस वाला सरफेस है, जैसे सैंड है, कंकर है, रफ रोड है, तो उसके अगेंस्ट पुल करना तो बहुत ही हार्ड होता है। तो कम खाना या ऐसा कुछ नहीं बोला है, बेसिकली क्लीन खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। तो जो आप ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कोई जन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैन है, Jan and the other two, Aileen and Caroline, they are very, very strong women. They have been doing this for a long time. For us, Madhvi is really strong too, because she regularly, mountaineers and whatnot. I have a lot of stamina, but I had to work on my strength. So I pull tires and I do strength training. So it was different for everybody. Denise she was really good at identifying that, and then giving us what each one had to do. So it was not about what cuisine you are eating, but to eat clean and to eat right. Have you getting the support from the government of India for this event?